Hello everyone, welcome to this class. आज आम यही क्लास रे इंग्लिश रो प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कशन करिवा SSB जूनियर असिस्टेंट एंड क्लर्क एग्जाम पाई आपण एही पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रो डाउनलोड करि परिबे 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स ईच क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर पई 2 मार्क्स रखिबे नेगेटिव 0.5 आउट ऑफ 60 4 केते रहउची कमेंट सेक्शन रे जणाउ ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट टेंस from to fill in the blanks. By the time we arrive at the station, the train dash. Which option is the right answer? By the time we arrive at the station, जेतेबेले by the time गोटे phrase आसीबो perfect रे रखिए मन रख. That's why will have left out. Future रो perfect is the right answer. Right? Will have left. Will have सहित verb रो third form. By the time we arrive at the station, the train will have left. Future simple अच्छी we arrive at the station future simple then सेटा sorry present रो simple अच्छी ना we arrive at the station present simple अच्छी then सेटा रहबा आपनकर future perfect रे okay next question number 2 identify the correct modal verb to express a past possibility by he dash have taken the wrong turn otherwise he would be here past possibility पे हमें कौन यूज करंती might यूज करंती option D might is the right answer he might have taken the wrong turn otherwise he would be here option D is the right answer should आपनकर general sense रे आसीबो most आपण जोटा 100% sure सही सेंस रे आसीबो can present रो ability एवं present रो किछि गोटे permission sense रे मध्ये आपण यूज करंती right so might is past ability मेर past tense होची might next question number 3 try करंतु convert the following sentence into the passive voice रे convert करिवा right passive voice रे convert करंतु the manager will sign the contracts tomorrow morning यार passive voice कोन हिजो the manager will sign what contracts the contracts object will अछि helping verb will थिले कोन हिजो will be then sign verb third form sign. So the contracts will be signed by the manager tomorrow morning. Option A is your right answer. Okay, option A समस्त choose करी छंती. Next is question number 4. Find the sentence with correct subject verb agreement. Correct subject verb agreement को नेकी correct sentence choose करिवा. Each of the participants are अछि भूल अछि each अछि singular. The collection of ancient manuscripts are valuable. Ancient manuscripts रो collection singular कथा कह जाउची आर अछि भूल अछि neither the CEO nor the board members agrees on the policy neither nor आसीबो माने nearest subject plural अछि but एठी verb singular अछि this is also wrong a number of students have volunteered for the event option D part रे आपनकर करेक्ट अछि a number of and the number of so the students मानकर गोटे नंबर तो सही सेंस रे हम प्लुरल यूज करि परिबा volunteer the event right option D is your right answer next question number 5 identify the non finite verb participle in the sentence below the broken has lay settled on the marble floor एठी आपनकर participle टा केउटा हबो has टा आपनकर broken verb रो थर्ड फॉर्म रे अछि verbal adjective so broken is the right answer option B is your right answer okay next is question number 6 try karantu the phrase to succeed in the sentence here only desire is to succeed function as an to सहित कोन आछि to सहित कोन आछि verb रो first form आछि this is infinitive को आजिबो infinitive verb ing आसीबो this is gerund okay verb ing gerund भी परिबो participle ही परिबो but gerund हेले noun भाव रे काम करिवो participle हेले adjective भाव रे काम करिवो participle रे verb रो third form मध्ये आसी परिबो present participle past participle रो कथा कहला next question number 7 change the following sentence from active to passive voice रे करंतु the committee has approved the new budget proposal the committee has approved verb पर what question कल कोन आछि new budget proposal
then has approved अछि has been approved is verb ro third form, right? So has been approved देखंतु option B रे अछि, option B is your right answer. Okay, the new budget proposal has been approved by the committee. Next, choose the correct verb form to fill in the blanks. I wish I dash more time to prepare for the interview. I wish I had more time. Always आपण जेतेबेले एमिति किछि wish, imagine, hypothetical situation कहबे verb रो second form रे रखिबे. तो verb रो second form कोन हिजो had हिजो, have रो had हिजो right answer. Next, identify the type of sentence based on its structure को नेकी. The sky darkened and the wind howled fiercely through the trees. देखंतु this is गोटे verb, this is also गोटे verb. तो दुईटा verb दुईटा subject गोटे compound sentence हे परिबो. दुईटा finite verb रो combination रे गोटे compound sentence form हुए. Okay, next, choose the correct connector to complete the sentence logically. As the several financial crises, the company managed to survive the fiscal year. Which option is your? Because of, despite, in spite, although. Which option is your right answer? As the severe financial crisis, the company managed to survive the fiscal year. Which option is your right answer? Despite habo. Okay, despite is your right answer. Despite ପରେ ଗୋଟେ noun किंबा noun phrase आसे ଗୋଟେ preposition ପାଇଁ ଆପଣ यूज करि परिबे. Despite is your right answer. Okay, बुझियला. Next question number 11. Identify the underline clause in the sentence. She was unsure whether she should accept the new job. ये underline part जो माने आपनकर bold part रे अछि एटा केउ phrase हबो कोन. She was unsure. What question कल कोन आछि? What question कल आछि तो what question कल object आछिबो. Object रे कोन आछिबो? Noun आछिबो. तो गोटे आपण noun clause को choose करि परिबे. She was unsure what? Whether she should accept the new job offer. Right? Next, convert the following sentence from direct to indirect speech रे convert करंतु. My teacher said you must submit your assignment by Friday. Must रो past form कोन हिजबो? Had to हिजबो. तो had to अछि आपनकर ऑप्शन बी रे. My teacher said that I had to. I काहे आसिला? You गोटे listener पाई. My teacher said me. ठीक अछि. एटी आपनकर listener नाही माने कोन? एटी हम me को कंसीडर करबा. तो me रो subjective case. I had to submit. I रो reflexive, I रो possessive case. My assignment by Friday. Option B is your right answer. Next, question number 13. Fill in the blank with the correct comparative degree. This laptop is dash than the older model I used to have. Question number 13 kon hibo kon. This laptop is dash than the older model I used to have. This laptop is more efficient. Comparative degree habo na, then achi more efficient than the older model I used to have. Next, question number 14 try karantu. Identify the types of phrase in bold in the following sentence. To win the championship was his ultimate goal for the session. तो कौन हबो इटी? और पूर्वरु जा रहबो दिस सब्जेक्ट. What question करंतु? What was his ultimate goal for the session? Obvious कथा what रो question noun रो आंसर आसीबे. तो noun phrase is your right answer. Noun phrase is your right answer. Next, question number 15 try करंतु. Convert the following sentence from indirect to direct speech रे convert करिवा. The commander ordered his soldiers to advance immediately. यार direct speech हबो कोन कोन. यार direct speech कोन हिजबो? The commander said to his soldier advance immediately. Option A is your right answer. Next, question number 16. Which of the following is a complex sentence? निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक complex sentence माने कोन दुईटा clause रहइबो dependent independent. After he finished his work, he left the office. Option C is your right answer. Next, question number 17 try karantu. Fill in the blanks with appropriate article use kariba. She is planning to visit
dash United Kingdom next summer. The is specific गोटे geographical place ପାଇଁ article the use करा जाए. Next, identify the collective noun in the sentence. The jury has submitted its final verdict to the judge. Jury is गोटे कौन collective noun. ठीक अछि. Jury is your right answer. Next, identify the adverb of frequency in the sentence. He rarely misses his morning yoga session. Rarely कौन गोटे adverb of frequency. Option B is your right answer. Choose the correct preposition to fill in the blanks. The new policy will come dash effect from the first of next month. Come into effect is fixed preposition पे हमें come into use करी परियो. Okay. Next question number 21 try करंतु. Identify the adjective in the following sentence. The antique wooden furniture added a sense of elegance to the room. तो ये आपनकर एडजेक्टिव कोटा हिजबो antique wooden furniture. तो ऑप्शन रे कोन अछि सेंस ऑफ ना सेंस पूर्व कोन अछि आर्टिकल आछि तो एटा हबनी रूम भी गोटे हबनी दा रूम पूर्व आर्टिकल तो आसी हिची फर्नीचर भी हबो नाही. ठीक अछि. फर्नीचर गोटे नाउन अनकाउंटेबल नाउन. तो antique इज योर राइट आंसर. ओके. antique wooden furniture रे antique इज गोटे एडजेक्टिव फॉर्म. नेक्स्ट, choose the correct article to fill the blanks. He is a European citizen but currently lives in the USA. It E achi vowel word achi mo यार pronounce कौन होची consonant achi U. That's why A is your right answer. Okay, option A is your right answer. Next question number 23. Fill the blank with the appropriate adverb. Appropriate adverb use करंतु. The weather was dash cold for us to go for a picnic. The weather was dash cold for us to go for a picnic. Which option is your right answer? Too cold हम too cold कही परिया ना उड़ा unpleasant sense रे or very cold. Much तो comparative and enough तो केबे आपनकर cold पर आसीबनी because adjective पर ही आपनकर enough ता आसीबो. Very हबो और true हबो. Very cold जदि हम कहबा this is positive degree में जदि रहबो then यहाँ पर explanation अछि. I think true ही appropriate हबो. Okay, unpleasant sense रे. Then गोटे passage टी रही passage टी पढ़िबा और हमें डायरेक्ट आंसर माने क्वेश्चंस को जिबा कीवर्ड को मैच करी आंसर करिबा. क्वेश्चन नंबर 24. According to the passage, what is the specific danger of flying for permafrost? हमको पढ़िबार अछि कोन एठी passage टी दिया जायछि because according to the passage एमिति कहिछि सेमिति कीवर्ड मैच कला बेलिया काई लागु नाही. passage टी आसंतु पढ़िबा प्रथमे. ठीक अछि. आपण passage टी बुझंतु किबा न बुझंतु बट आपण पढ़ंतु वर्तमान so that आपनको भीतर से हैबिट गोटे डेवलप हबो. ओके. एंड आपण परीक्षा रे इजीली करि परिबे. आपनको जे कोनोसी वर्ड तार मीनिंग जानि नाहंती बा अर्थ बुझी पान नाहंती आपण रिलेट करि पान नाहंती आपनको भीतर किछि भी हो नाही देन इट्स ओके बट आपण पढ़ंतु प्रथमे पढ़िबाटा डेवलप करंतु. राइट. आसंतु पढ़िबा प्रथमे हमें देन हमें क्वेश्चंस को जिबा. से कहूची देखंतु क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर ए डिस्टेंट थ्रेट. माने क्लाइमेट चेंज रो कथा कहै दैछि कि नै सिंपल कथा बुझिले. ओके. क्लाइमेट चेंज ता गोटे विपद अटे. ओके. नो लॉन्गर ए डिस्टेंट थ्रेट माने कोन आ सेटा से विपदटा दूर रे नै. ठीक अछि. अति निकटतम हे गलानी से सेंस रे. It is an unfolding reality with a tangible consequence across the global. ठीक अछि. एटा पूरा विश्व पई गोटे माने चिंतार कारण. ठीक अछि. एहा ही वास्तवता. One of the most visible and alarming impact is accelerated melting of polar ice caps and जो glacier और जो ice जो कोन होची तरल होची सेटा गोटे चिंताजनक घटना. This phenomenon contributes directly to rising sea level रे यार प्रभाव पडुची which pose an existential risks to the coastal communities and island nation गुडाकर स्थिति की नहीं मध्य प्रश्न उठुची. जो माने द्वीप रे माने द्वीपीय जो माने अंचल गुडाक कोन रहिची महासागरीय बा सेई जो द्वीप अंचल. Furthermore, the thawing of permafrost
पोस्ट देखो एटा से वर्ड रे अछि ना a permanently frozen layer of soil in Arctic releases vast quantity of methane, a greenhouse gas, for more potent than carbon dioxide. जो माने एमिति हबा द्वारा कोन होची मिथेन गैस टा रिलीज होची मिथेन गैस रिलीज होची जहा कार्बन डाइऑक्साइड रु मध्ये अधिक क्षतिकारक अटे. This creates dangerous feedback loop. Warming triggers methane release which is turn cause to more warming. ठीक अछि माने पृथ्वीटा जेहेतु आपनकर वार्म हबो तो सेटु मिथेन बाहरिबो पुनी मिथेन जतेले रिलीज हबो पुनी पृथ्वीटा वार्म हबो से विषय रे कहगला. तो देखिबा हमें ए कीवर्ड टी पाइले एठी देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन रिलेट करी होची अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द स्पेसिफिक डेंजर ऑफ द having or frost. It causes immediate flooding in coastal area. It releases methane which accelerate global warming. Okay, methane विषय को जाइछि ना देखंतु ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इट destroys agricultural land permanently. It makes soil no. ऑप्शन बी ही हबो यार राइट आंसर 24 ऑप्शन बी समस्त चूज करछन मिथेन रो कथा मिथेन रिलीज होबा कथा को जाइछि देखिले. Then जिबा क्वेश्चन नंबर 25 the phrase a dangerous feedback loop in the passage refers to कौन हम देखिबा dangerous feedback loop. आसंतु नेक्स्ट हम पढिबा beyond the cryosphere माने जेउठी सब कोन सॉलिड गुडा को रहिछि माने आइस सब रहिछि cryosphere. Climate change manifest in increasingly erratic weather pattern. ठीक अछि regions that were historically fertile and experiencing prolonged droughts leading to severe agriculture distress and food insecurity विषय कहगला. Simultaneously other areas are confronted with unprecedented territorial rains and जो आपनकर विपज्जनक फ्लडिंग माने जहा कहबो कैटास्ट्रोफिक flooding displacing millions of people. The economic cost of these extreme weather event is staggering, diverting billions of dollars from the development to distress relief. Yes, ए सब घटना पई जोटा डेवलपमेंट काम रे लागि थांता सेटा एठी यूज होची बोली कहै छै. देखिबा एथरे कोन हम रिलेट करि परिबा कि क्वेश्चन नंबर 25 the phrase a dangerous feedback loop in the passage, the economic cycle, distress relief funding, the interaction between the drought and floods, the process where warming causes methane release, which cause more warming. Okay, एटा ही हबो बोथे. ठीक अछि आपण देखन टिके पढिबे एटा ऑप्शन सी तो ठीक लागुची ये ट्राई करिवे. ओके नेक्स्ट the word erratic in the second paragraph most nearly erratic रो मीनिंग कोन आछि जोटा हम सेकंड पैराग्राफ रे पढिले erratic माने अनप्रेडिक्टेबल हे परिबो ना अनप्रेडिक्टेबल ठीक अछि. नेक्स्ट what is the author's primary purpose in mentioning the Paris Accord. then जीवन नेक्स्ट Paris Accord विषय कोन कहै छै देखियो Paris Accord माने एथरे तो नाही एथरे देखिबा the scientific community has been equivocal in its assessment को नेकी जो आकलन को नै से माने इक्विवोकल अछंती माने एपटे सेपटे दुई पटर माने एब्सोल्यूट कथा से माने कहउछंती कोन ना ह्यूमन एक्टिविटी पार्टिकुलरली burning of fossil fuels and large scale of deforestation रो कथा कहै जाउची. It is primarily drive however the response from the government has been patchwork of जो commitments rather than a unified decisive action बदल रे इटा होउची बोली कहै गला. While renewable energy technologies like solar and wind power have become significantly more affordable and efficient, their adoption is not happening at the pace required to meet the target set by the international good agreement है like the Paris Accord. तो ये Paris Accord विषय कहै गला. तो पढ़िले एटा ऑप्शंस को दिबा Paris Accord रे कोन कहै जे देखंतु Paris Accord विषय रे एटा है जिवो
to suggest that current effort are insufficient विषय कहगला ठीक अछि ए जो एही चुक्ति अनुसार हम पाखे जो विंड एनर्जी जहाँ भी किसी यूज करा जाई परिबो बट सेटो भी नियंत्रण करिया पई एटा माने जो माने चेष्टाटा रही करंट एफर्ट्स आर इनसफिशिएंट कहगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 which of the following statement is not supported by the passage extreme weather event have huge economic cost all government are taking decisive unified action climate change leads to both drought and floods the transition to a green economy can create job कोटा आपनकर सपोर्टेड नाही माने पैसेज द्वारा रिलेट करू नाही देखंतु क्वेश्चन नंबर 28 एटा गोटे टिके कॉम्प्लिकेटेड रही नै पैसेजटा एटा भी पढिले चलंतु लास्ट स्टैंडर्ड भी पढि नबा तो जानि परिबा कोन एठी पा जल्दी देन को गला पब्लिक अवेयरनेस रहिबो ग्रास रूट मूवमेंट्स have grown अछि प्लेसिंग maintaining pressure on policymakers upare the transition to a green economy is not merely mane not only an environmental imperative but also an economic opportunity madhya promising new jobs is sustainable industries yet a critical gap remains between the rhetoric and reality bhitare overcoming the challenge required not only technological innovation but also profound political will and the and collective shift in consumption pattern globally the window of opportunity to avoid karibo the most catastrophic outcomes in narrowing rapidly एटा भी पढिले देन हम जे देखिबा ओके आपण पढिले आपण किछि मीनिंग फीनिंग जदि आपण किछि जान ना ठीक अछि जस्ट खाली रिलेट करंतु कोठा हो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हैव ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट एटा भी देखि चंदी एटा भी ठीक रिलेट करू जे all governments are taking decisive unified action climate change lead both drought and floods रो कथा कह जाउची एटा भी हबो ग्रीन इकोनॉमी रो कथा भी देखिले आई थिंक ऑप्शन बी हबो कारण पेच वर्क भली काम करछि ना जदियो गोटे सुजोग अछि तो एटा बोधे सपोर्ट करू नाही ई पैसेज पर स्टेटमेंट पर इक्विवोकल रो कोन आइबो ई पैसेज अनुसार एब्सोल्यूट कहि परिया इक्विवोकल एब्सोल्यूट हे परियो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 according to the passage what is needed alongside technological innovation to combat climate change by more fossil fuel exploration reduce global population political will and shift its consumption pattern विषय कह जाय पारि ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर ओके पूरी थरे आपण ए पार्ट टिके पॉज करी भला भाबरे पढिबे पैसेज टी ओके बिकॉज़ हम कोन करछन कंप्लीट पैसेज टी पढि नांती हम प्रथम प्रश्न पढि एटा सॉल्व करि चंती तो आपण टी पढंतु वर्तमान ओके वीडियो पॉज करी पढंतु पूरी थरे एटा पढंतु एटा पूरी थरे एटा वीडियो पॉज करी टी पढिबे राइट देन आपण पूरी थरे ट्राई करिवे तो एठी जहा जहा आंसर आछी जहा जहा आंसर बाहर करछन ता ठीक और भूल आपण कमेंट सेक्शन में जणाइबे आउट ऑफ 60 मार्क्स आपनकर स्कोर केते रहउची आपण कमेंट सेक्शन रे जणाइ परिबे ओके एवं ए पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रो डाउनलोड करि परिबे क्लास टी को लाइक करंतु शेयर करंतु थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास